Hello dear students, today we are going to start with a new chapter that is 1.4 Big Data Big Insight. After completing 2.4, Have You Earned Your Tomorrow, written by Edgar Guest, let's move on to the next chapter of today that is 1.4 Big Data Big Insights. The chapter is based on the informative basis. Therefore, in this chapter, there is no story, no writer. It means Maharashtra Board has added this chapter in our English syllables because of the fact that we must also know about what is big data. So, this chapter is going to put up in the form of awareness by all the stream of the students from science to commerce to arts. All the students are going to know that the mobile, the smartphones that they are using, and the data which is regularly collecting, where it is going, how it is analyzed, how it is used or monitored by whom. We must focus on the title. Title Big Data. I think a student up to 10th standard you had studied in ICT. ICT में आपने पढ़ा ही होगा कि डेटा क्या होता है. In computer you had studied that data means stored information. Yes, stored information that we have. That information that can be transferred, that can be used, that can be shared, that can be seen at any point. Yes, abhi WhatsApp pe for example, any of the messages if I get, any photos if I get, I not only share with my family members but I share with all my friends and everyone. यस सो वो जो फोटो, वो जो पिक, वो जो वीडियो, वो जो GIF है, वो मेरे पास नहीं, वो डेटा इज ट्रांसफरिंग टू एवरीवन एंड वंस इट इज ट्रांसफर्ड इट इज शेयर्ड. दैट इंफॉर्मेशन वंस इट इज शेयर्ड इट इज कलेक्टेड इन द अदर मोबाइल्स. yes same way, same information if we are using in our laptop, in our tablet, in our computer, the big amount is been stored every minute of our time. So in this chapter we are not going to study any story. किसी भी story पे नहीं हम focus करेंगे. We are going to pay attention on what is big data. Yes, big data is also very important, especially for the multinational companies of today. And today, if the multinational companies are earning so much of money, it is only because of the big data analysis that they do. Insights means analyzing, monitoring, understanding. So big data को उतना analyze करना, understand करना और उसको proper use में लाना for the development of the nation, for the development of the people, for the development of the lifestyle of the people, that we are going to see in this chapter. So without wasting time, let's see what are the things that we are going to see today in this lecture written in this slide properly. Firstly, we are going to see the introduction of this chapter, that is Big Data, Big Insight. Secondly, we are going to see the summary of this chapter. And thirdly, we are going to start line by line explanation of the chapter. So let's see first short introduction of this chapter. So this chapter is a very technical, very digital, very practical lesson. In fact, I would say Big Data, Big Insights is going to teach us that the smartphones, that the laptop, the mobile, that PC, that is personal computer, whatever, wherever we are using the data every time. अभी एक मोबाइल पे हम लोग इतने सारे डेटाज यूज़ करते हैं. एवरी मिनट वी ब्राउज, वी सर्च, वी बाय समथिंग ऑन द एप्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वी ऑर्डर सो मेनी थिंग्स लाइक ऑन स्विगी, जोमैटो. इतने सारे एप्स हम रेगुलरली व्हेन वी आर यूजिंग. Who is monitoring? There is someone who is monitoring, analyzing our टेस्ट. हमारा जो टेस्ट है, जो पसंद है, हमारे पसंद को, टेस्ट को somebody is analyzing, monitoring, and that is the big multinational companies. They analyze, they realize that this is the product that the customers or people require, and
accordingly they make their products in such a way. So when you are online, everything that you do online, every search, every post, every message that you send, any comment you put, every sharing of post that you do is getting recorded. And after that it is recorded, where that data is used, that we are going to study in this chapter. वो data use कैसे होता है, that we are going to study in this lecture. So let's get started. Data means we all know it's a stored information. It's a set of information. Yes, अगर मुझे कुछ information चाहिए तो मैं Google पे जाके search करके I will get the information. So that information, it is collected in a numerical form. And it means those who had done MSCIT and those who had done IT, they might be knowing that it is collecting in the form of binary form, that is 0110 format, which can be stored and that can be transferable. आप कोई भी डेटा, कोई भी मैसेज आपके मोबाइल पे आता है, any articles, any GIF, any post, any picture, any videos, all things are transferred, all things are shared with another. Yes, so this data may be image, maybe sound, maybe music, graphics, GIF, videos, post, it can be anything. It can be document, it can be report, it can be letter, anything. It's the information which is collected usually in a numerical form. एंड इट इज़ स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड. आप उसको स्टोर करते हो और बाद में किसी को ट्रांसफ़र भी करते हो, एंड दैट जिसको ट्रांसफ़र किए वहाँ से किसी और को ट्रांसफ़र होता है. सो दैट डेटा, इफ़ it is collected in big volumes, big variations, big velocity, big veracity and big value. ये याद रखना, डेटा के 5 मेन वी कैन से इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं. So 5 V's of the big data are as follows: volume, variety, velocity, veracity and value. So big data, if you would see, it is increasing very fast at every minute. एक सेकेंड में you can see, we see so many things. कभी हम लोग YouTube पे कुछ songs देखते हैं, then after some period of time we go to the WhatsApp and then we go on the another app, like we go on the Amazon, or we purchase something from there. So regularly we are using, every minute, every second we are using such apps online. We are buying, we are seeing, we are liking that videos, whatever it is. For example, whenever we browse on net, Google पे कुछ देख लिया, YouTube पे कोई videos को share किया, Amazon पे you had purchased some, ordered some product, all things whatever we are doing, it is recorded at one place. और जो record कर रहा है, that person is monitoring and analyzing according to our needs and likes. Okay, so that it is insight. Insight means an accurate and the deep understanding of the data used by the people. कोई भी people अगर वो information यूट्यूब पे पर्टिकुलर थिंग सर्च कर रहा है, एनी इन्फॉर्मेशन, इफ दैट पर्सन इज सर्चिंग और लाइकिंग, सेम वे गूगल पे जाके ही सर्चिंग एंड लाइकिंग पर्टिकुलर थिंग, तो वो सारे थिंग्स को मॉनिटर कौन कर रहा है? देयर इज बिग कंपनीज, दैट इज IT कंपनीज आर देयर. दे आर अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स माइंड एंड अकॉर्डिंगली दे मेक the products in such a way that the people would like. पहले वो लोग एनालाइज करते हैं कि people को क्या पसंद आ रहा है, what are the things that the products are liked by the people and what are the things that the products are not liked by the people. Things which are liked by the people, accordingly they make the product which is liked by everyone. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक मोबाइल परचेस करने का है. ओके, इफ़ आई वॉन्ट टू परचेस वन मोबाइल, आई विल गो ऑन द अमेज़ॉन एंड आई विल सर्च. मुझे 10,000 से 15,000 के बीच का मुझे एक मोबाइल चाहिए. बाय द टाइम व्हेन आई विल सिलेक्ट वन मोबाइल, उस जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगी, विद दैट मुझे उसका कवर भी
उसका कवर का भी ऐड आ जाएगा, उसका स्क्रीन कवर का भी मुझे ऐड आ जाएगा. सो मेनी एड्स आई विल गेट. द एनालाइजर, द पर्सन हु इज़ मॉनिटरिंग, उसको मालूम है कि सिर्फ मोबाइल तो नहीं लेगा वो, मोबाइल के साथ डेफिनेटली रिक्वायर्स द कवर, द कवर ऑफ दैट मोबाइल, द स्क्रीन ऑफ दैट मोबाइल. तो वो सारा थिंग्स इट रिक्वायर्स. तो वो सब चीज़ एक साथ वहीं पे रिप्रेजेंट करेगा. यू कैन सी इन दिस स्लाइड इट इज़ प्रॉपरली गिवन. एक के साथ दो तीन चीज़ मिलेगा. हेडफोन्स भी आप देखोगे वो शो करेगा कि इसके साथ आप हेडफोन्स भी परचेस करो, सो दैट नॉट ओनली यू परचेस द मोबाइल बट ऑल्सो यू परचेस ऑल द अदर थिंग्स. तो इस तरीके से प्रॉफिट किसको हुआ? प्रॉफिट गोज टू दैट कंपनी, दैट अमेजॉन कंपनी, जिसने मोबाइल के साथ अदर प्रोडक्ट्स भी सेल किए एंड गॉट द गुड मनी. सो दैट इट इज़ इनसाइट. सो दिस इज़ द बिग डेटा एंड बिग इनसाइट. इट में भी आपने ध्यान दिया है यूट्यूब पे. I think somebody had thought, but those who had not paid attention to it, please pay attention from today onwards. YouTube पे if you select any of the video, कोई भी वीडियो आपको देखने का है, कोई एक सॉन्ग आपको देखने का है ऑफ एनी ऑफ द एक्टर लाइक शाहरुख खान का आपको एक कोई सॉन्ग देखने का है. आफ्टर सीइंग दैट सॉन्ग यू विल सी दैट नंबर ऑफ अदर शाहरुख खान सॉन्ग्स स्टार्ट कमिंग इट एंड दे गो ऑन गिविंग यू द रिकमेंडेशंस. एक के बाद एक रिकमेंडेशंस देते जाते हैं. यस, आपने देखा होगा रिकमेंडेड चैनल भी दिखाते हैं, डिफरेंट हिट्स ऑफ शाहरुख खान, ऐसे एक के बाद एक आप देखोगे आपको दिखाएंगे. सो दैट यू विल स्पेंड मोर टाइम ऑन यूट्यूब एंड बिकॉज ऑफ दैट YouTube company will become more richer. Okay, so it is nothing but understanding the people's mind and accordingly they make the थिंग्स. तो ये आप देख के रहोगे कि आपके मोबाइल पे अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो मूवीज सॉन्ग्स रहेंगे. आपके मॉम में भी कीर्तन भजन ज़्यादा सुनते होंगे, गॉड से रिलेटेड थिंग्स, तो उनके यूट्यूब पे चैनल पे आप देखोगे वही सारे वीडियो शो करते हैं कीर्तन भजन वाले. जो आप सर्च करते हो आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके लाइक्स के हिसाब से वही चीज़ आपको शो होता है. सिर्फ वहाँ पे ही नहीं. आई विल गिव वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट. लाइक ऑन अमेजॉन, अगर आपने कोई एक कैमरा देखा, कैमरा में बी वेरी कॉस्टली लाइक 12,000 15,000 का है. अभी आपका बजट नहीं है, राइट नाउ यू कांट एबल टू परचेज द कॉस्टली कैमरा. तो आप बंद करके आप अपने अदर साइट्स पे चले जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अदर एप्स आपका है स्टडी का, तो उसमें आप लोग स्टडी करते हो. तो आप देखोगे जब भी आप ऑनलाइन रहोगे डेफिनेटली उसके साथ आपको एडवर्टाइजमेंट जो अभी अपने कैमरा का देखा था वो आपको डिफरेंट रिकमेंडेशंस देते हैं. डिफरेंट कैमरास का आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे कि ये आपको 12,000 में मिल जाएगा, 15,000 में मिल जाएगा. इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट थ्रू द एडवर्टाइजमेंट. इतना ही नहीं, अभी मैं FB पे चली जाऊँगी कुछ पोस्ट लाइक शेयर करने के लिए, तो वहाँ पे भी मुझे कैमरा का ही ऐड मिलेगा. सेम द कैमरा ऐड वुड बी गिवन. वो छोड़ के मैं अगर MX प्लेयर पे आके सॉन्ग सुनने लगती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे सेम कैमरा का ऐड मिलने लगेगा. डिफरेंट कंपनीज के देयर ऐड एंड देयर सेल्स एंड देयर डिस्काउंट्स एंड ऑल इट इज़ गोइंग ऑन शोइंग टू मी. सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ बिकॉज समबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग माई माइंड सेट कि मुझे ये चीज़ परचेस करने का है एंड अकॉर्डिंगली दे आर सेंडिंग द एड्स एंड रिकमेंडेशन सो दैट वी विल परचेस एंड दैट कंपनी विल बिकम richer. So at last I would say that this big data had almost changed the life of the consumers because consumer life is now better, more convenient, more easy. घर बैठे ही आप सब चीज़ ऑर्डर कर सकते हो. The big data is something that one size fits all. It's like अलादीन का जीनी होता है ना, that here it has been said. Optimum utilize of बिकॉज ऑफ द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी. इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इन आवर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ. सो अब फॉर एग्जाम्पल इन 1 month इफ़ वी आर यूजिंग 100% ऑफ द डेटा, तो वो 100% ऑफ द डेटा का सिर्फ 20% इंफॉर्मेशन दे आर एनालाइजिंग. एंड think that if they start analyzing more, it means they will get more information and accordingly they are going to change the customer's life more properly. So is that clear? That is the introduction of this chapter. Summary of the chapter. We all use mobile phones. Do you ever thought how much data it generates of what we do, like doing the text message, phone calls, emails, photos, videos, different Google searches and music apps.
1 मिनट का चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. 1 मिनट में if for example we are using 40 exabytes, imagine if this number is multiplied by 50 million people users of the smartphone. It's a lot of number, and even it is processing. This amount is quite a lot for traditional computing system to hold on. This massive amount of data is known as big data. Let's have a look at the data generated per minute on the internet. From the Snapchat, 2.1 million. Next is Google, 3.8 million people are searching their queries. On Facebook, 1 million people are logging regularly and sharing their videos and post regularly on it. YouTube, like for example, 4.5 million videos are watched regularly at every minute. On emails, 188 millions of emails were sent at every minute of our 24 hours. That's a lot of data has been collected. Yes. So how do you classify any data as big data? This is possible with the concept that we are going to understand today with the 5 V's. That is the 5 pillars, that is V. What are the 5 V's? Volume, velocity, variety, veracity, and value. So let's understand this process. An example we will take from the healthcare industry, how it is been processed. For example, hospitals and clinics across the world generate massive volume data like 2314 exabyte data. They are collected annually. That we can say it is volume. Next is in the form of patient records. Patient कितने सारे आए, उनके टेस्ट कितने हुए, like कोविड टेस्ट है तो कितने सारे, how many people had tested positive. All the data is generated at a very high speed which tells the high velocity of data. इसको कहते हैं velocity of big data. ये सारे information it is recorded at some place. Okay, कितने patients आए, कितने forms fill हुए, okay, and all these things are collected. नेक्स्ट, what variety of people were coming. एक ही प्रॉब्लम तो नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के प्रॉब्लम्स होंगे. सो दैट ऑल इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. जितने भी टाइप्स के पेशेंट आते हैं उनका एक्सेल फाइल मालूम है ना, एक्सेल फाइल में ये पूरा कलेक्शन होता है. दैट इज़ लॉग फाइल्स, एक्सरे इमेजेस, this all it has been collected. Structured है, it's excel sheets. Semi structured means log files. Unstructured data means x-ray images. All these things are collected and analyzed by big companies. Next is veracity. Veracity means accuracy, how much the patient are trusting on the that particular hospital. कितने amount of people को trust है एक hospital पे. Trustworthiness, accuracy which is generated, and that data is the veracity. Yes, and at last all these things it is analyzed. All the data is analyzed and later on it is been beneficial and valued by the medicine sector. And because of this analyzing, medical sector can detect the problem and diseases. They understand the people's problem and the diseases. ये एनालाइज करने के बाद वो लोग बेटर ट्रीटमेंट कर पाते हैं. दे कैन डू द बेटर ट्रीटमेंट एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन. इफ इट इज़ मोर एंड इट इज़ नॉट रीचिंग अप टू द पीपल, दे कैन reduce the value of that particular medicine so that all the needy people can get it. So this is known as big data. Big data is very useful. It is collected, it is analyzed, it is understood and monitored by these big companies like Facebook, like YouTube, like all the people, those who are making the apps, like Google. They understand the people's mind and accordingly they help to the people for the betterment of the people.
नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ बिग डेटा. अब ये बिग डेटा का यूज़ किधर होता है, मतलब एडवांटेजेस किधर है. ऑफ कोर्स इट इज़ यूज्ड इन द ट्रैफिक व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. लाइक गूगल मैप पे आप देखोगे, जीपीएस ऑन करते हो, देन यू विल अंडरस्टैंड वेयर आई हैव टू गो. यस, सो वेरियस यूजेस है इसके. यू माइट बी समबडी इज़ नोइंग एंड समबडी इज़ नॉट नोटिसिंग, जो कि मैं लेक्चर में अब आपको नोटिस कराऊंगी कि दीज आर द थिंग्स विच इज़ now the time to be noted by all my students. So start paying attention to everything what is happening in your mobile. Next is understanding the weather pattern. Of course, if there is a bad weather, it teaches us, it guides us. Okay, so any climatic problem, if it is, it teaches us a very good way. So big data is of course useful over there. Next, most important is healthcare industry, and today healthcare industry is facing a great pandemic, and that is COVID-19. So the records of the patients and diseases, and whenever it is used, they are using it right now. Only in the summary we had taken or seen the example of it. Next is banking, finance and trading. Of course, you can in banking or in share market, it is very nicely used. These data are collected earlier, and because of it we can compare with the past data with the present one. Banking, of course, you can see for transaction of any of the money, like we nowadays we are doing Google Pay, Paytm and all. So it is the credit goes to this big data which has analyzed the people's problem, and accordingly they had structured this online payment, and it has been utilized in a very proper way. Yes, next is advertising. Of course, advertising, Amazon's or डिफरेंट प्लेसेस पे आपने देखा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल जोमेटो है, स्विगी है. योर नीड्स अकॉर्डिंग टू योर लाइक्स, ऑल दिस थिंग्स आर बीन शोन wherever you are going on any social networking sites like Facebook, like WhatsApp, like Instagram, like you are going on या स्नैपचैट, किधर पे भी जाते हो आप लोगों को वो ऐड मिल ही जाता है, जो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया. नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एंड मीडिया. ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स. आप अगर एक नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड इफ़ यू आर सीइंग, आप आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसी समय आप देखोगे, दैट टाइम ओनली several episodes are started coming of that particular Netflix, and so many are going to come according to your likes and taste. Okay, YouTube पे भी अगर एक आपने सॉन्ग देखा, एनी मूवी का सॉन्ग देखा, एनी वीडियो देखा, एनी नॉलेजेबल थिंग यू हैड सीन, उसके बाद यू आर गोइंग टू सी सेवरल recommendation started coming up, so that you will spend more time on these social networking sites. Next is education industry. Education industry, of course, like for example आपने देखा होगा any of the app that you download, उसमें देखो आजकल not only the particular chapter is been taught, but their question answers is also there. उसके टेस्ट के पैटर्न्स भी दिए रहते हैं, MCQ टाइप भी क्वेश्चन सेट किया रहता है. मीन्स अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग दे आर गोइंग टू सेट, सो दैट यू आर स्टिक विद दैट पर्टिकुलर ऐप. और जब वो ऐप में पढ़ोगे तो आपको और भी दूसरे दूसरे ऐप के एड और एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, सो दैट यू विल स्टार्ट गोइंग मोर डीपर इन टू इट. सो ऑफकोर्स वी कैन सी दिस बिग डेटा इन टूडेज सिनेरियो. इफ यू वुड सी, इट्स लाइक अलादीन का जीनी बोलते हैं ना, तो सेम वे दिस बिग डेटा इज इट्स हैविंग अ वेरियस usage. It is the point that we have to use the optimum use of it, but don't think that it don't have the negativity. It is having some negativity or pitfalls. So let's start line by line explanation of the chapter. So what is big data? I had taught you earlier. There is a revolution, write down the meaning, change in the lifestyle of people which has been affected by big data. Because of the big data, if you would see, there is a great changes happened in the people's life. As I had told you earlier, big data is all about how our browsing habits on the internet is collected and then used in various ways. The big companies use the data for commercial purpose. Okay, means because of the big data, you can see there is a great changes happen in the life of people. What are the changes happen? Let's see. Like for a
example, our food habits, our health care, our traveling pattern, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. See, 360 degrees, it means it is saying overall change had happened right from the food pattern. If you would see, nowadays we order so many foods on these sites, on these apps like Zomato, Swiggy, and our healthcare, it means because of the, you can see, these social networking sites, especially YouTube and all, there are several channels are there where they are teaching the people about how to be conscious for the health, and all these things, if you would see, is actually changing the life of the common people. Traveling, of course, you can see, by it is said also that the more we travel, the more we grow, the more knowledge we will get. And earlier ऐसा था कि wherever we are going, we don't have the proper knowledge कि आगे सामने कहीं होटल है, रेस्टोरेंट है कि नहीं, पेट्रोल पंप है कि नहीं. But now, because of the Google map, you can easily able to know what is there in the particular area. Our scientific pursuits, for the society, for the people, our thought had also changed, if you would see. Okay, so that here it has been said, it means it's an all round development of a human being had happened because of the big data. The massive data available with us can really work wonders. Okay, but the credit goes to the big data companies who are collecting, who is analyzing, who is monitoring and understanding what we require in our life. Friends, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp? Students, now it is saying to you how this big data works. So it is said that when we are online student, there is whatever we do online, like if we go on the FB, we post something, we share something, we like something, any images, any photos we had seen, we liked it, we share it with someone, so share a post, maybe on WhatsApp, maybe on you can see Facebook, anywhere, or Instagram. Visit any website if we are going. Okay, like we are going on the educational site, sometimes we are going to the music site, sometimes we are going to any like discovery knowledge sites, we are going to know information, or we are making the online purchases like Amazon, on Flipkart, whatever the things that we require, or we watch the video on Netflix, or listening the music on MX Player, whatever we are activity we are doing online. Do you know, students, somebody is monitoring all these things? Yes, somebody is monitoring whatever activity we do. It is recorded, मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड. आपको शॉक होगा सुन के, पर ये रियलिटी है कि आपका जो भी एक्टिविटी है, समबडी इज, एज यू आर ऑनलाइन, लाइक शेयर करते हो कोई भी पोस्ट ऑन FB, एनीथिंग ऑन WhatsApp, ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑन एनी ऑफ द थिंग, वेयर एवर यू आर गोइंग, ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, फूड ऑर्डर करते हो, गूगल मैप पे जाके कुछ सर्च करते हो और वहाँ से गूगल लोकेशन ट्रेस करते हो, वॉट एवर you are doing, all things are, this data has been collected, it is recorded, and it is understood by the by these engineers of the data engineers, and they are understanding what is our taste, what is our demographic behavior, हमारा particular thing के लिए what is our behavior, why we like that particular product, what are our needs, what are our likes, all it has been recorded at one place. So a huge amount of data is collected every minute. मैंने आपको समरी में बताया था कि कितने सारे data it has been collected. So think about in 24 hours how much data it has been collected per day. Let me give you an idea of huge data. The data might be, आपको लगता होगा डेटा कितना बड़ा है. लेट मी टेल यू हाउ मच इट इज़. द बिग डेटा कैन बी पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियन पीपल.
all from different sources, for example web, sales, customer contact center, social media, mobile data, and so on. So so as we understood in a proper way that whenever we are online, our all the activities are recorded, monitored, and analyzed, and all this data is collected, and thus this data becomes very huge. And we'll be thinking that what's the size of the data, and these datas are collected in petabytes and exabytes. Okay, so here you can see the one unit of data is bytes, and after that next kya hota hai, megabytes. Okay, next is gigabytes, third one is terabyte, fourth one is petabyte, fifth is exabyte, sixth is zettabyte, and you can see at last it is yottabyte. Data, one unit of data, if you would see, these all information is being collected. So must remember, data, if you would see, it is collected either in between petabytes and exabytes. It means lots of information, lots of records. Records are collected in a billions and trillions of records were collected of the millions of people from different sources. मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ, इफ यू वुड सी, रिकॉर्ड्स जो रहते हैं, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ऑनलाइन, ऑल दिस थिंग्स आर कलेक्टेड ऑफ अ मिलियंस ऑफ पीपल. सबका कलेक्शन होता है, ओके, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. मे बी इफ यू वुड सी लाइक वेब, okay, from internet, if you are browsing on Google, or from sales, like we are purchasing something from Amazon, Flipkart, Myntra, wherever it is. Next, customer contact number, okay, from there also. Mobile data, whenever downloading any of the app from there. And last is the social media, that is the Facebook, Instagram, okay, Snapchat. So from there all the informations were collected. Must remember students, आपने देखा भी होगा कि ये जो फोटो एडिटिंग एप्स होते हैं, ओके, जब भी आप इंस्टॉल करते हो, दे आस्क यू वन क्वेश्चन, डू यू एक्सेस योर गैलरी. ओके, तो आप लोग इतने एक्साइटेड रहते हो दैट यू एक्चुअली give the permission to access, give you the permission to that app to access your gallery. आप लोग सब अलाउ करते जाते हो, गैलरी पूछता है तो आप अलाउ करते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछता है तो आप अलाउ करते हो. सो आप लोग उनको अलाउ करते हो. these apps can easily able to see inside the gallery what are the types of photos you are having, what type of people you are being contact with. So this is, in this way, millions and trillions of information is collected of a millions of people, and that it is data. So must remember what is petabytes. Petabytes is units of information equal to 1000 million. And what is exabyte? Exabyte is the unit of information equal to 1 quintal. Okay, so now we are going to study how this data is available to industries and companies in enormously. Enormously means largely increasing. तो ये data ये लोग collect कैसे करते हैं? I had told you that this data is having or characterized or divided into 5 pillars. अभी summary में भी सिखाया था, मेडिकल डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लेके. अगेन आई एम टेलिंग यू वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स हाउ मच डेटा वी हैव विच इज मेजर्ड बाय zettabytes and yottabytes. Okay, big amount of, you can see, data is been collected from any of the department. Every minute on YouTube 300 hours of वीडियो आर अपलोडेड. एक मिनट में अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में 300 hours of videos are uploaded. Estimated more than 2.1 trillion photos are shared on Facebook in one single day. Next, if you would see, it is variation. Variation means it is the biggest challenge of data. Okay, अब वो data वो लोग collect करने के बाद they divide it. Okay, they divide from where this data is coming. It is coming from medical sector, it is coming from education sector, it is coming from sports sector, or for example it is coming from banking sector. So you can see all this data is been categorized. Okay, अलग अलग कर दिया जाता है. The data is collected in a huge and includes so many types. Like data बहुत सारा रहता है, like it may be in form of image, sound, documents, video files, audio, social media updates, बहुत कुछ रहता है. तो वो सबको ये categorize करते हैं, अलग करते हैं, differentiate करते हैं. These are unstructured data. Organizing the data in meaningful way, complex task, especially when the data is changing rapidly. अगर आप देखोगे तो इसको इन लोग फटाफट डिवाइड करते हैं कि किस कहाँ से कौन सा इंफॉर्मेशन आया है, और वो उस सेक्टर के हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट, इफ़ यू वुड सी, इट इज़ velocity. Velocity means speed.
ओके अभी एक टाइम था स्टूडेंट फॉर एग्जांपल व्हेन इंटरनेट वॉज नॉट देयर एट एवरी हाउस, तो हम लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए रहता था तो वी गो टू द साइबर एंड वी सर्च एंड वी कम आउट, मतलब इतना हम लोग नेट नहीं यूज़ करते थे, सो द डेटा वॉज नॉट कलेक्टेड इन सच ए वे, बट नाउ इट इज ऑल द पीपल आर हैविंग द internet in their mobiles, so many data is been collected in one day. Okay, so Google processes somewhere around average more than 40,000 सर्च क्वेरीज एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में 40,000 लोग अपना क्वेरीज सॉल्व करते हैं गूगल की वजह से, विच रफली ट्रांसलेट्स टू मोर देन 3.5 बिलियन सर्च पर डे. Veracity means it is all about making sure that the data is accurate and correct. Okay, veracity means वो देखते हैं कि ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है इट इज़ करेक्ट एंड ट्रस्ट करने के लायक है कि नहीं. while the making is statistic report on number of illiterate in India, can you reply on the numbers mentioned in Google? How accurate it is, it's a big question, so it is the challenging. Veracity means how much we trust on a particular app, whatever the data it has been collected by millions and trillions of people in one day, after categorizing into another department, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल देते हैं. जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो डेटा चला जाता है, वेदर रिपोर्ट का है तो वो वेदर रिपोर्ट में वो पूरा डेटा चला जाता है. जब डिफ्रेंशिएट हो जाता है तो लास्ट में अब उस पर आता है कि वो जो डेटा है उसके ऊपर हम लोग कितना ट्रस्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया है, लाइक इफ आई वॉन्ट टू मेक द स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑफ हाउ मेनी पीपल आर देयर इन माई कंट्री, इंडिया आर स्टिल इलिटरेट. ओके, कैन यू रिप्लाई ऑन द नंबर्स मेंशन इन द गूगल. अभी जो गूगल में जितने नंबर्स दिए हैं उसका तो हम रिप्लाई नहीं कर सकते, उस पर हम टोटली ट्रस्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वी आर गोइंग देयर, वी आर काउंटिंग द पीपल एंड देन वी कैन ट्रस्ट ऑन इट. नेक्स्ट लास्ट में आता है वैल्यू. अभी मैंने कोई एक प्रोडक्ट बना दिया, अब बनाने के बाद उसका अर्निंग होना बहुत कंपलसरी है. कोई ऐप बनाया, वो पीपल को लाइक हो रहा है कि नहीं, वेदर द पीपल इज़ लाइकिंग और नॉट, इफ़ सम प्रॉब्लम इज़ देयर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ये सब होता है लास्ट में वैल्यू. कितना मुझे अर्निंग हो रहा है, एक पर्टिकुलर कंपनी लाइक अमेजोन को कितना अर्निंग हो रहा है. डीमार्ट मैंने बोला लास्ट 3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा डेवलप किया. वाई? बिकॉज दे हैड डन ऑल द 5 V's. सो वैल्यू इज़ द एंड गेम ऑफ दिस डेटा. द क्वेश्चन इज आफ्टर सो मच ऑफ डेटा एनालाइजिंग, इज योर ऑर्गेनाइजिंग क्रिएटिंग एनी वैल्यू ऑफ इट. इतना आपने डेटा कलेक्ट किया, यूज़ किया, आपको कुछ अर्निंग हो रहा है, दैट्स द ग्रेट थिंग दैट इट टॉक्स अबाउट. विल द न्यू इंसाइट help you to create any products? It means whatever the analyzing that you had done, whether it is useful or not, or whether the new analyzing helped in the new market or not, or in cost cutting. किस मतलब कोई अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट जाता है तो आप उसको रिड्यूस कर रहे हो, सो हाउ यू आर रिड्यूसिंग. खुद से तो नहीं रिड्यूस कर सकते, ऑफकोर्स पीपल का माइंडसेट पढ़ के. एंड हाउ इज़ द बिग डेटा क्रिएटिंग वैल्यू, और वो बिग डेटा से ही अगर आप देखो टुडेज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इज अर्निंग सो मच. द credit goes to the big data because they analyzed it, they recorded, they monitored, and that's why they are getting more value. So such a data is easy to obtain but so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analyst is used to give insight that were previously incomprehensible. You can see student, this big data, it has been collected and it's so big that it's very difficult to monitor, analyze and record. How much data in per day that you are using, out of, if it is 100%, out of 100%, 20% is only analyzed, recorded and monitored. लाइक आप देखोगे डी मार्ट, चलो डी मार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं. डी मार्ट ने क्या किया, 3 ईयर्स तक लोगों का डेमोग्राफिक बिहेवियर स्टडी किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट डी मार्ट इज़ वेरी फेमस. सो यू कैन सी दे एक्चुअली अंडरस्टैंड द पीपल्स माइंड कि वो लोग क्या परचेस करते हैं, किस में उनको इंटरेस्ट है, व्हाट आर देयर लाइक्स, व्हाट आर देयर डिसलाइक्स, व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ द पीपल. अगर मैंने एक कैमरा बना के मार्केट में डाला, मुझे कैसे पता चलेगा कि उनको कैमरा पसंद आया कि नहीं, कस्टमर लाइक द कैमरा और नॉट. यस, so I require what? I require the people's mindset. मुझे next you can see big data analyst is the complex process of examining, yes, large and varied data sets or big data to uncover information. It's a big information. मैंने कहा इसका 20% only use होता है. Okay, such as hidden pattern, unknown correlations, marketing trends, customer preferences. All these things के ऊपर आप देखोगे ज़्यादा preference लगता है, like what our
is our hidden patterns, means what we like. अभी कुछ चीज़ एनीथिंग इफ़ यू रिक्वायर तो वो आप जस्ट हिडनली चेक करते हो एंड देन यू जस्ट मूव आउट. इट मीन्स all this data, it is monitored. These analysts understood that what we require and what we do not require. Unknown correlation, it means आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला आप इंस्टाग्राम पे रहोगे, कोई पोस्ट शेयर करते रहोगे, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आप गूगल पे कुछ ब्राउज करोगे, यू विल गेट द एड ऑफ द इंस्टाग्राम, you will get the advertisement of the Facebook. So what is this? It is unknowingly interrelated. Market trends, it means what is famous, what is right now, like a जैसे festival time है, there is so many, you can see discounts and offers are coming. So all these ads, it has been shown in the middle of your whatever studies app पे हो तो उस पर भी आप देखोगे कि उनके ads वगैरह शो होते हैं. कस्टमर प्रेफरेंसेस, वॉट एवर यू रिक्वायर. ओके, अगर कोई ऐप पे जाके आप कोई सर्च कर रहे हो, इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू कम ऑन द यूट्यूब, आपको वही थिंग्स जो भी आपने सर्च किया वो रिप्रेजेंट होगा आपके सामने. फर्स्ट यू विल सी ऑन योर यूट्यूब पेज द सेम थिंग्स वर presented. This with such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages. Hence all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. मैंने कहा ना, डेटा एनालिस्ट, इट मीन्स जो डेटा इंजीनियर्स है, वो लोग क्या करते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. एंड आफ्टर कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन, what they do, if they get the information about the Amazon, if they get the information about Flipkart, Swiggy, Zomato, जितने बड़े कंपनी से वो कलेक्शन करके एनालाइज करके दे गिव दिस डेटा टू द दीज बिग कंपनीज. और इन लोग ये बिग कंपनीज से, दैट इज़ IT कंपनीज से ये डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली दे मेक द प्रोडक्ट्स लाइक्ड बाय द पीपल. सो by doing this, these data analysts becomes very richer because they sell this data to these big companies. Okay, and these big companies also become very richer. How? Because they understand the people's mindset and accordingly they formulate. Okay, जैसे Amazon है, वो फीडबैक लेता रहता है, वो पीपल का हमेशा डेटा देखता है कि कितने लोग सर्च करते हैं Amazon पे, what are the things that they are purchasing, वो उसी हिसाब से डिस्काउंट्स आपको दिखाता जाएगा, so that you are tempted और तुम जाके ज़रूर उसको देख के परचेस करोगे आफ्टर सीइंग द एड्स ऑफ द Amazons. Many industries have advanced by miles from their competitors. It means if you would see Amazon, यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल है Amazon and DMart also. DMart, if you would see last 3 years, it had just whooped out, means एकदम बढ़ के ऊपर आया. And how it has been raised? Because the DMart had understood the people's mindset. And in fact, nowadays there is a great competition in collecting the data from these data analysts and changing the you can see products according to the needs of the customer. It's not the amount of data that it is important, but what the organization do with the data is that much important. इसका मेन आप देखोगे तो डेटा कलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता. मैं पूरा डेटा कलेक्ट करके बैठ जाऊँ बट उसको आई एम नॉट यूजिंग इट, इट मीन्स इट इज़ ऑफ नो यूज़. एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ. कुछ लोग होते हैं जैसे स्टूडेंट लाइफ में, दे ओनली कलेक्ट द नोट्स और वो पढ़ते ही नहीं है, तो वो नोट्स कुछ किसी यूज़ का है क्या? स्टूडेंट, इफ़ यू जस्ट गो ऑन कलेक्टिंग द नोट्स एंड नोट्स एंड नोट्स, पर तुम उसको पढ़ाई नहीं करते हो तो वो किसी यूज़ का नहीं है. द मिनट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, स्टडिंग, देन इट इज़ ऑफ यूज़ ना. येस, सो सेम वे दीज कंपनीज are gathering the data in a big amount, but how much the company is working hard on these data, that's a big question to understand. And if those company who work more on this data, आज देखोगे they are the highest earning companies. So that here it has been said. इसके बहुत फ़ायदे हैं. बिग डेटा इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ बिग यूजेस. सो लेट्स सी पॉइंट नंबर 1, लोकेशन ट्रैकिंग. Location tracking, if you would see where we are doing, especially in Google Maps, we are using this term location tracking. If you are ordering on Zomato, on Swiggy, on Amazon, on Flipkart, you do the location tracking by understanding when the product is going to come, from where it is delivered, and
कहाँ तक पहुँचा, where it had reached up to, and when it is going to reach to you at home. Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS and Google Maps make use of big data. Students, GPS full form is Global Positioning System. एक्चुअली हमारे मोबाइल में एक सैटेलाइट के थ्रू जीपीएस है. व्हेनेवर वी कम ऑन द गूगल मैप और जीपीएस जब हम ऑन करते हैं तो हम एक्चुअली में वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन आर सराउंडिंग वी कैन अंडरस्टैंड. हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स आर रिकॉर्डेड बाय, यू कैन सी, गूगल. ओके, गूगल इज मॉनिटरिंग ऑल दिस थिंग्स, वेयर वी आर गोइंग, वेयर वी आर रीचिंग, वी आर इन मुंबई और वी आर गोइंग टू द अदर सिटीज़. सबका इंफॉर्मेशन आप देखोगे, इट इज़ देयर इन द there by the Google or big data. With geographic positioning and radio frequency identification sensors which is there in our mobile, we get all the real time data about traffic. और ये होने से हम लोगों को wherever we are going, for example if I am going to Mumbai and there is lots of traffic over there, because satellite connection से एक GPS है, that is where it is directly connected with a Google map, and with that it is understood that where do you stay. आपका मोबाइल जहाँ पे ट्रैक होगा, it is understood that you are also staying over there. So ये आपको कहाँ पे मिलता है, Google map पे. The carrying of things from one place to another. So what here it has been said that you can even plan for traveling. आप traveling के लिए भी सोच सकते हो, अगर आप travel कर रहे हो और खुद ट्रैवल कर रहे हो, और एनी प्रोडक्ट इफ़ यू आर, because GPS is there and Google Maps are there, I would understand that in this period of time there is a traffic, there is a congestion, it means बहुत ज़्यादा रश होने वाला, वो भी मेरे मोबाइल पे शो होगा on a particular route, whichever route I am going. Information if the route is closed, और वो पहले information दे देगा. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल गणपति विसर्जन है तो वो पहले से मुझे अलर्ट कर देगा कि दिस रूट इज़ क्लोज, दिस रूट इज़ क्लोज, दिस रूट इज़ नॉट रनिंग प्रॉपरली. सो हाउ आई केम टू नो दैट दिस पर्टिकुलर रोड इज़ क्लोज्ड, दिस नाका इज़ बंद, हाउ आई विल अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ द GPS और Google Maps which is controlling me, which is understanding my thought, analyzing my thought, and making me aware that what's happening in the recent future. Information if the route is closed or whatever it is. Okay, so they give all information. Understanding if there is accident had happened, if something disaster had happened, this GPS makes the people aware that don't go on this accident place. Okay, you can plan your own route according to the travel time, transportation of goods. If you have ordered something online, you can track the location of the goods in transit. Transit, underline the word transit, means are coming from one place to another. It's very easy nowadays to order the goods from any places, and thanks to these sites like Amazon, like फ्लिपकार्ट, इन लोगों ने गुड्स को ईजिली, हम लोग स्पेशली आप देखोगे कोविड टाइम में व्हेन ग्रॉसरीज वर नॉट अवेलेबल एट अ मच पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, things which are not available, because of these sites we can easily able to make it available. Okay, and goods were easily transported, which is very good. आप easily order कर रहे थे and at your house the goods are coming also. Transit, it means the products are coming at a particular time whenever it is required. You can also track the condition of the goods. आप अगर एक बार अमेज़ॉन पे कोई थिंग्स ऑर्डर करते हो, then it gives you the time कि tomorrow evening में आपको मिल जाएगा, next day और day after tomorrow you will get, and in between आपको messages भी आते रहेंगे कि right now where your product is, it means from where it has transported and where it is raised and when you are going to be delivered. All these things are going to come and make you understood about it. So you can also track the condition of the goods. तुम खुद भी track करके understand कर सकते हो that whatever you had ordered, like watch, like camera, whatever you had ordered, it is going to come in a short period of time. This has immensely helped the logistic companies to reduce the risk in transport, improve speed and reliability in delivery. ये सब करने से मालूम क्या हुआ है, कंपनी को बेनिफिट हुआ है. The credit goes to the company that, so this has helped to the logistic. Logistic, it means those who are collecting the
big data. Big data companies, as they came to know, because of this good services, okay, fast services which is provided by these companies, what had happened is that there is a reduce in the risk of transportation. It means the people can track the location and can understand where is my product. And because of this, you can see the company improvement had also happened, because there is a good transportation of goods, and because fast delivery, the people started trusting on a particular goods company like Amazon, Flipkart and all. So reliability, it means trust on the delivery. By this we come to the end of this lecture. However, line by line explanation of the chapter is not yet complete. So in the next lecture we are going to see remaining line by line explanation of the chapter. Secondly, we are going to see icebreaker questions. Thirdly, we are going to see brainstorming questions we will do. Till then, read the chapter very carefully. Try to find out brainstorming questions. However, I am going to give in my next lecture, and enjoy learning. This is Garima signing off. Stay home, stay safe.